Assalamu alaikum. This is Muzammil Ijaz from Faculty of Mechanical Engineering at NAVTCC University. I have more than 250 kilowatt of solar system designing, installation and commissioning experience. I am delighted to be instructor of NAVTCC course. We have batch of 25 students. We partner with AFI Engineering Pvt for solar system designing, installation, commissioning process, and we also have in-hand 100 kilowatt solar projects in an university by Free Fuel Private Limited. So student witness their designing, installation and commissioning process. We are also thankful to our son Solar Private Limited company for arranging their visit in Pakistan's second largest 50 megawatt solar power plant at Karo. As per World Bank report, we have 1500 megawatt of solar installation, which is only 4% of Pakistan's solar radiation capacity. So I'm very optimistic. Many companies are currently working, and also many companies will be formed in future, and these students will lead. As a success story, 3 students start their job in solar company, in leading solar company, and 4 students start their own solar company. So I am very thankful to Prime Minister Pakistan for this youth development initiative that will be the part of nation progress. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Shahir Shahid and I was enrolled in batch 2 of NAVTCC Solar PV System Designing. First of all, I want to thank NAVTCC for providing me this opportunity. The course is really helpful in designing and installation of solar systems. In this course, we learned how to implement and install solar systems of hybrid, off-grid and on-grid systems. Moreover, I have completed my internship from AFI Energy, where I have designed and configured hybrid, off-grid and on-grid systems of 7 kilowatt, 8 kilowatt and 15 kilowatt. In the last, I want to thank NAVTCC and Prime Minister for providing me this opportunity. Thank you. Assalamu alaikum. I am Saqib Bashir. Currently, I am doing last year of electrical engineering from NAVTCC Karachi. I have completed my 6-month solar PV design course through NAVTCC. During this period, I have learned many things such like how to design, how to simulate and how to install solar systems. During this course, NAVTCC provided us different visits in which include 50 megawatt solar power plant and 100 megawatt wind power plant, which are located in Gharo, and also visits residential and commercial systems. So moreover, I have also done my internship through AFI company, in which I have installed a grid type solar system, which was a 15 kilowatt system. The designing and simulation of this project was done by me using helioscope and PV cyst. Thank you so much to NAVTCC for giving this opportunity to enhance my skills. मेरा नाम है मोहम्मद अनस खान। मैंने NAVTCC का कोर्स किया है NAD यूनिवर्सिटी से, जिसमें मैंने सोलर के बारे में पढ़ा। इन्होंने पढ़ाया, बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाया, थ्योरी फिर प्रैक्टिकल भी कराए। इसके बाद हमें इंटर्नशिप मिली थी, जिसमें हमें सोलर वाटर हीटर इंस्टॉल करना था मस्जिद की उस छत पे। और हम इसके वर्किंग कुछ इस तरह से है कि सोलर रेडिएशन इस पे कॉपर की प्लेट्स पे जब पड़ती है तो इसकी क्या कहते हैं हीट जनरेट होती है, जो उस बॉक्स में जाती है। उसमें पानी सर्कुलेट होता है कि ठंडा पानी आता है और गर्म होता है। गर्म होने के बाद टैंक में जाता है। टैंक में जब हमें उसमें नीचे जब ज़रूरत होती है वज़ू खाने में या और वाशरूम वगैरह में, तो इसमें ये होता है कि हमने वहाँ सेंसर लगाया हुआ है। जैसे ही हमें ज़रूरत हो वो सेंसर ऑन होता है और गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। और अगर हमें ज़रूरत नहीं है और तो सेंसर जो है वो स्टॉप कर देता है गर्म पानी को और वो टैंक में स्टोर हो जाता है। और इसी में बोलूँगा कि NAVTCC का बड़ा ज़बरदस्त कोर्स था। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू NAVTCC की टीम पूरी और प्राइम मिनिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद जुम्मन शिराज है और मैं कराची यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ का तालिब इल्म हूँ। हाल ही में मैंने 6 माह का सोलर PV डिज़ाइन में कोर्स किया था NAD यूनिवर्सिटी से। उससे पहले मैं नावाकिफ़ था कि किस तरह सोलर एनर्जी हमारी इस दुनिया में तरक्की पा रही है, उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, किस तरह हम अपने इन सूरज की किरणों से फ़ायदा उठा रहे हैं। जिनमें से चंद मिसालें ये हैं कि हम इन सूरज की किरणों से अपने घरों को रोशन करते हैं, इनके ज़रिए हम पानी को गर्म कर सकते हैं। इस
कोर्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ नेवटेक की टीम का और प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने हमें ऐसा माहौल फ़राहम किया, एनईडी यूनिवर्सिटी जैसा माहौल दिया जिसमें हम ये कोर्स अंजाम दे सके हैं, और ऐसे उस्ताद मुहैया किए जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमारी बहुत हर स्टेज पर हमारी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।